All ready? Okay. पार्वती पति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, प्रोफेसर अनिल कुमार त्रिपाठी जी, मेरे मित्र श्री राणा प्रताप सिंह जी और बीएचयू के मेरे सभी मित्रगण। तो आज जो मैं लेक्चर देने वाला हूँ उसमें मेरे मदद करने के लिए भास्कर जी भी यहाँ हैं। आप देखेंगे कि मैं उनका प्रयोग किस तरीके से करूंगा। अब मेरा जो ये विषय है आज के लेक्चर का वो यही है कि भारत के इतिहास का भारत के संस्कृति के पहचान का इतिहास। तो मैं पहले से समझाने देना चाहता हूं कि ये भारत का इतिहास नहीं है और ये भारत के सभ्यता का इतिहास नहीं है। ये भारत के सभ्यता के पहचान का इतिहास है। It is the history of our civilizational identity. So see, in that sense, it is a somewhat different presentation. तो आप सभी को शायद जानते ही होंगे कि ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में हमारी पहचान को ही इस तरीके से अंग्रेजों ने इस तरीके से हमारे सामने इस तरीके से प्रस्तुत किया कि एक हमारी कोई पहचान ही नहीं है। जॉन स्ट्रैटी जो एक्टिंग वाइसरॉय थे 1872 में, उनका ये कहना था कि द फर्स्ट एंड मोस्ट एसेंशियल थिंग टू लर्न अबाउट इंडिया इज दैट देयर इज नॉट एंड नेवर वाज एन इंडिया। विंस्टन चर्चिल ने कहा कि इंडिया इज अ जियोग्राफिकल टर्म, इट इज नो मोर अ यूनाइटेड नेशन देन द इक्वेटर। अब ये स्वाभाविक है कि एक कॉलोनियल पावर ये सोच रखती है क्योंकि वो चाहते ही हैं कि आप पे वो कॉलोनियल डोमिनेशन करें, तो स्वाभाविक है कि इस किस्म के चीजें वो कहेंगे। लेकिन स्वाधीन होने के 75 साल बाद भी बहुत ऐसे बुद्धिजीवी हैं, बहुत ऐसे राजनीतिक नेता हैं जो ये सोच रखते हैं कि इंडिया इज नॉट अ नेशन, इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो मैं आपको इस इतिहास की पहचान का जो इस सभ्यता के पहचान का जो इतिहास आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, उसमें आपको साफ दिखेगा ये जो पहचान है वो बहुत प्राचीन समय से आता जा रहा है। इसमें एवोल्यूशन जरूर है, लेकिन ये कोई नई सी चीज नहीं है जो हम मॉडर्न इंडिया में अचानक से इसको हम लोगों ने आविष्कार किया है। अब प्रश्न शुरू में ही ये उठेगा कि ये शब्द भारत जो है वो कहां से उभर आई है। तो इस शब्द का सबसे पहला जो जिक्र है वो है ऋग्वेद में। तो आप सभी जानते हैं ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है हमारा, और ऋग्वेद में एक जनजाति का जिक्र है जिसका नाम है भारत या पृथ्वी। और ये जनजाति सरस्वती नदी के तट पे ये बसे हुए थे। तो हमेशा आप देखेंगे कि सरस्वती को आज भी सरस्वती देवी है, उनको भी आज तक भारती के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे आप सरस्वती पूजा करेंगे तो उसमें अंत में आप कहेंगे भगवती भारती देवी नमस्ते। तो ये शब्द सरस्वती और भारती और भारत में एक बहुत ही गहरा संबंध है। और सरस्वती नदी आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो ये साफ है कि उस समय उस काल में ये सबसे महत्वपूर्ण नदी रही होगी, क्योंकि इसका जिक्र 72 बार किया जाता है। इसका वर्णन 45 ऋग्वेद के 45 मंत्र सूक्तों में मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका महत्व क्या था और उसका जो वर्णन है वो कैसा है। सिंधु माता
यानी मदर ऑफ रिवर्स। तो आप अगर फैन बंद कर दें तो हाँ, इसको बंद कर। तो ये साफ है कि इस नदी का इस सभ्यता के साथ कोई एक बहुत गहरा संबंध रहा होगा, जिसके कारण ये इसका जिक्र किया जाता है बार बार। तो प्रश्न ये उठता है कि ये नदी कहां है, क्योंकि आज सरस्वती नाम का कोई छोटे मोटे नदियां हैं इधर उधर देश में, लेकिन ये कोई बड़ी नदी नहीं है जिसका नाम हम सरस्वती के नाम से जान सकते हैं। तो ऐसे बहुत वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं, इंडियन स्कॉलर्स भी हैं, जो ये सोच रखते हैं कि ये नदी कहीं मध्य एशिया में कहीं थी या ये काल्पनिक नदी है। लेकिन ऋग्वेद में ही इसका साफ वर्णन है। एक नदी स्तुति सूक्त है जो ऋग्वेद में है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि ये नदी यमुना और सतलेज के बीच में है। नदी स्तुति सूक्तम अगर आप सुनेंगे तो आप देखेंगे कि पूर्व से पश्चिम तक उत्तरी भारत के जो नदियां हैं उनका एक एक करके नाम लिया गया है, और ये बहुत ही साफ है कि यमुना और शुतुद्रु यानी सतलेज के बीच में ही ये सरस्वती नदी बहती थी। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं चाहता हूं कि भास्कर जी आपको ये नदी स्तुति सुनाएं, जिससे आपको इसमें विश्वास हो। इमं मे गंगे यमुने सरस्वती शुतुद्रिस्तोमं सतता परुष्णिजा असिक्निजा मरुद्वृधे वितस्तयार्जी कीये श्रुडुष्या सुशोभया। तो इससे नदुस्तुति सूक्तम से ये बहुत ही साफ है, इसमें कोई बहस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये नदी साफ शुतुद्रु यानी सतलेज और यमुना के बीच में बहती। तो ठीक है, इतना तो साफ है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ऋग्वेद में ही साफ वर्णन है कि ये नदी हिमालय से समुद्र तक बहती थी। ये ट्रांसलेशन है, प्योर इज हर कोर्स फ्रॉम द माउंटेन्स टू द ओशन अलोन ऑफ द स्ट्रीम सरस्वती हैड डिसेंडेड। ये भी साफ है। तो आप सरस्वती नदी के बारे में क्या जानते हैं कि ये यमुना और सतलेज के बीच में है और ये हिमालय से समुद्र तक बहती है। समस्या यह है कि ऐसी कोई नदी आज तो नहीं है, लेकिन कभी ऐसी कोई नदी थी। तो हम अगर आप सैटेलाइट फोटोग्राफ और रेडियो चैनल्स का स्कैनिंग करें, आज भी आप एक्चुअली गूगल मैप्स भी देख पाएंगे, अगर आप जानते क्या किस चीज के लिए आप ढूंढ रहे हैं, कि कभी एक ऐसी नदी बह रही थी जिस एग्जैक्टली इसी डिस्क्रिप्शन का आपको मिलेगा। ये जो हरा जो लाइन है वो है इसका पेलियो चैनल, यानी सूखी हुई जो नाली है उस नदी की। और आप दिख रहा है कि ये नदी जो है साफ से हिमालय से निकलती है, फिर आज के हरियाणा से बहती हुई उत्तरी राजस्थान से होते हुए आज के पाकिस्तान में होके वापस फिर भारत में रण ऑफ कच्छ में आके उसके वहां एक खाड़ी थी पहले, वहां जाके गिरती है। तो ये जानने की जरूरत है कि ये जो आप धारा देख रहे हैं वो हजारों साल से बह रही थी, तो यहां वहां बहती रहती थी, क्योंकि यहाँ भूकंप हुआ, बाढ़ आया, तो इसका जो ये पेलियो चैनल है वो स्टेबल नहीं है, इधर उधर होता रहता है। लेकिन साफ है कि यहाँ एक बहुत बड़ी सी नदी कभी बहती थी। अब इसका हमारे साथ क्या लेना देना? लेना देना ये है कि सिंधु जिसको अभी हम लोग सिंधु सभ्यता कहते हैं या हड़प्पन सभ्यता कहते हैं, उसके जो अवशेष हैं, उसकी जो बस्तियां हैं, वो सिंधु नदी के ऊपर ज्यादातर नहीं है। तो आपको साफ दिख रहा है कि इसी सूखी सी नदी के जो नाली के इर्द गिर्द हैं, और इस ड्राई रिवर बेड को आज हम लोग घग्गर या आकरा के नाम से जानते हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि
प्राचीन इतिहास में इस नदी का कोई बहुत महत्व रहा हो। और इस नदी का भी बहुत एक इंटरेस्टिंग इतिहास है। आइस एज के पहले, यानी 20,000 साल के पहले, आज से 20,000 साल के पहले ये बहुत विशाल एक नदी थी। फिर आइस एज के समय में ये पूर्ण रूप से लुप्त हो गई। फिर आइस एज के बाद, यानी आज से 9-10 हजार साल पहले ये फिर से बहने लगी। और इस बार बर्फ के पानी की वजह से नहीं, बल्कि बरसने के पानी से, क्योंकि ये रेनफेड रिवर बन चुकी थी तब तक। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि छोटी मोटी सी नदी थी, क्योंकि इस एरिया का जो जलवायु था उस समय काफी ह्यूमिड था। यहाँ मॉनसून में भी और विंटर मॉनसून दोनों में इसका बहुत यहाँ पानी बरसता था और इसका ये नदी बहती थी। और ये जाके रन ऑफ कच्छ, जहाँ आप आज देखते हैं कि सॉल्ट फ्लैट्स हैं, उस समय वो इस नदी की ये एस्चुरी थी। यानी आज जब आप सुंदरबन जाते हैं, उसका वहां का जो ये लैंडस्केप था उस समय ये सुंदरबन जैसा था। इसीलिए आप हड़प्पन कॉइन्स, ये सील्स में कभी सिंह नहीं देखेंगे, क्योंकि सिंह एक ड्राई क्लाइमेट में रहने वाला पशु है। जबकि आपको दिखेंगे बाघ दिखेंगे, राइनो, एलिफेंट इत्यादि, जो आज असम में रहते हैं, वो उस समय इस एरिया में रहते थे और सील्स में दिखते हैं। अब क्या हुआ कि आज से 2000 साल पहले ये नदी पूर्ण रूप से, इसमें ये बहुत बड़ा, इस एरिया में एक बहुत बड़ा सूखा सा पड़ा और ये पूर्ण रूप से सूख गई। तो 2000 साल, ये हम लोग ग्राउंड प्रूफिंग से जानते हैं, सैटेलाइट फोटोग्राफ से जानते हैं कि तकरीबन 2000 ईसा पूर्व में ये, मतलब आज से 4000 साल पहले। अब एक और प्रश्न उठता है कि ठीक है, भारत नाम का कोई एक जनजाति रही होगी, वो सब ये सरस्वती नदी के तट पे रहते थे। लेकिन ऋग्वेद में ये भी वर्णन है कि ये भारत जो ये जनजाति थी, वो अपने मातृभूमि को सप्त सिंधु के नाम से जानते थे। तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि सप्त सिंधु कहाँ होगा, तो कहते हैं शायद ये सरस्वती नदी है, पंजाब के 5 नदियां हैं और सिंधु नदी है। तो एक काफी बड़े से इलाके के बारे में ये सोचते हैं। लेकिन अगर आप ऋग्वेद में भी देखेंगे तो असलियत यह है कि ये एक ही छोटे से एक क्षेत्र के बारे में कह रहे हैं। क्योंकि ये जो बाकी नदियां हैं, जो सिंधु के जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उनका इन सप्त सिंधु, इन 7 नदियों में कभी भी इनका नाम नहीं लिया जाता। ये काफी साफ है ऋग्वेद से, ये सभी नदियां सरस्वती नदी की उपनदियां थी, यानी ये सरस्वती नदी की ट्रिब्यूटरीज थी। और ये फिर से यहाँ एक चांट है, कमिंग टुगेदर ग्लोरियस लाउडली रोरिंग सरस्वती मदर ऑफ फ्लड सिंधु माता, the seventh with copious milk with fair streams flowing. So it's quite obvious that all these rivers are flowing into this. So we are dealing with essentially the Saraswati river and its tributaries. So why am I giving you this long story? Because essentially we are dealing with a very small area which today is Haryana. तो आप एक विशाल क्षेत्र के बारे में नहीं कह रहे। ये जनजाति जो थी, एक छोटी सी जनजाति थी, वो आज के हरियाणा में बसी हुई थी। तो एक ऐसे मामूली से जनजाति का नाम जो भारत है, तो उसके नाम से हम लोग आज एक विशाल देश का नाम क्यों रखें? इसका क्या महत्व है? इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा इतिहास जानना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले ये मैं फिर से प्रूव करना चाहता हूं कि ये मैं जो कह रहा हूं ये मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा। देखिए, महाभारत में भी जब बलराम अपने तीर्थ में निकले थे, वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने भाग नहीं लिया था, पर वो जब तीर्थ में निकले थे तो वो सरस्वती नदी के तट से चल रहे थे। तब तक सरस्वती नदी ज्यादातर लुप्त हो चुकी थी। फिर वो जाके एक जगह पहुंचे जिसका नाम ही था विनाशनम, मतलब वहां तक नदी आके लुप्त हो रही है। और फिर वो कहते हैं कि इसके उत्तर में सप्त सारस्वत हैं, मतलब 7 नदियां हैं जिसका नाम है सुपर्वा, कंचिक,
कंचनाक्षी, विशाला, मनोरमा, ओघावती, सुरेणु और विमला तका। यानी ये हैं इस नदी के उपनदी, मतलब ट्रिब्यूटरीज। और ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो पंजाब की नदियों से इनका कुछ लेना देना नहीं। और साफ कहा हुआ है कि ओघावती जो है वो कुरुक्षेत्र से निकलती है। तो अगेन फिर से साफ है कि आप जो कह रहे हैं ये छोटी सी जनजाति है, वो आज के हरियाणा के इर्द गिर्द रहते हैं। तो इतना सा मैंने आपको बैकग्राउंड दिया है। क्यों? क्योंकि मैं ये समझाना चाहता हूं कि ये जो नाम भारत है, ये बहुत ही एक छोटे से मामूली से जनजाति का नाम है। तो अचानक से इस नाम का महत्व कहां से आया, और उसको समझने के लिए आपको ये ऋग्वेद में जो इतिहास है उसको समझना पड़ता है। ऋग्वेद में वर्णन है कि एक बहुत महायुद्ध हुआ। तो एक बार ये हुआ कि ये जो जनजाति, भारत जनजाति के जो राजा थे उस समय, उनका नाम था सुदास, उनके गुरु थे वशिष्ठ। उनके ऊपर 10 जनजातियों के एक कॉन्फेडरेसी ने उनके ऊपर आक्रमण किया पश्चिम की ओर से। तो बस इस आक्रमण में बहुत एक युद्ध हुआ। वो युद्ध हुआ परुष्णी नदी यानी रावी के तट पे। और भारत जो जनजाति है, उन्होंने इन 10 जनजातियों को पूरी तरह से पराजित किया। और उसमें वर्णन है कैसे 6060 योद्धाओं को उन्होंने मार डाला। तो फिर मैं भास्कर जी को अनुरोध करूंगा कि इस दशराजन्य युद्ध के जो सुक्त हैं उनको आपको सुनाएं, जिससे आपको विश्वास होगा कि इसका कैसे साफ वर्णन है ऋग्वेद में। ओम पुरोडा इत्तुर्वशो यक्षुरासीद्राये मत्स्यासोर्निशिता अपीवा सृष्टेञ्चक्रुर भृगवोद्रुह्यवश्च सखायमतरद्विषूचोः दुराध्यो अदितिं सेवयन्तो चेतसो विजगृभ्रे परुष्णीम् मह्नाविव्यक्पृथिवीं पद्यमानः पशुस्तविरसयच्चायमानः अधश्रुतां कवचं वृद्धमप्स्वः दुह्युन्निवृणः वज्रबाहुः वृणाना अत्र सख्याय सख्यान् त्वायन्तो ये अमदन्नमुत्वा निगव्यवो नभो द्रुह्यवश्च षष्टे शता शुशुभुषत्सहस्रा षष्टिरवीरासो अधिषड्डुभो यो विश्वेदेन्द्रस्य वीर्या कृतानि। So it is now, even if you didn't understand it, let me explain to you. It is a explanation of of a big battle. It has a list of all the tribes that came to fight. So some of the tribes were the Bhrigus, the Anus, the Parasas, who may be the Persians, who had come attacking the 10 tribes from the west. Now what happens is that this great victory happens, and you have Sudas then celebrates his victory by conducting the very first Rajasuya and Yajna, by which he is declared the Chakravartin. And then he turns to the east, और बस पूर्व की तरफ वो एक और जनजाति को पराजित करते हैं जिसके राजा थे भेदा। तो इसके बाद, as you can imagine, he comes to be the chief of a very large empire. This is the very first empire that we know of in Indian history. Now, स्वाभाविक है कि उस समय जो रीत थी आज भी यही है कि अगर आपने
कोई एक जनजाति दूसरे जनजाति को पराजित करती है तो कहते हैं कि हमारे देवी देवता आपके देवी देवता से ज्यादा शक्तिशाली हैं, तो आप अब हमारे देवी देवताओं को पूजिए। स्वाभाविक है, आज भी ऐसी सोच रखने वाले बहुत लोग हैं। लेकिन the Bharatas did something quite different at the end of it. What they did is, instead of forcing the defeated tribes to worship their gods, they actually asked all the defeated tribes to bring their rishis, their intellectuals, their poets, and they began to then ask them to write down, or rather collect, not write down, they didn't write it down, but collect all their thinking. They even invited those tribes that they were in contact with, but they were not a part of their empire. So it includes, for example, Vishwamitra, who was a part of the defeated tribes. It includes the Bhrigus, who were part of the defeated tribes. And all this material is put together in what we know as the Vedas. The Veda Samhitas, not the other texts that were attached to the Vedas later as explanations, but original Veda Samhita, which is the Rig, the Sama, and the Yajur. Not even the Atharva, which is a later text. Now, what is interesting about this is after that, they basically create a contract between all the tribes that we will worship each other's gods and goddesses. And for that, they then, at the very end of the Rig Veda, they then have a chant where they say that, look, this is a contract by which we will assemble together. We will give a space to all the gods of all the tribes, a space around the fire. So notice this is a model of assimilation rather than domination. And this is there in the very last chant of the Rig Veda, which goes somewhat like this. I will explain this after Bhaskarji has told you, has chanted it out to you. Many of you may be familiar with it also. ॐ संसमिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य इडस्परे समिध्यसे सलोमशून्याभरा सङ्गच्छध्वं संवदध्वं सम्भो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनसः सह चित्तमेषाम् समानं मन्त्रमभिमन्त्रयेव समाने नभो हविषा जुहोमि समानी भाकूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु भोमनो यथा वस्सु सहासति। ओम। तो इसका जो अनुवाद है अंग्रेजी में ये है, assemble, speak together, let your minds be of one accord. As all the ancient gods unanimously sit down and are given a space at their appointed share, the place is common, common the assembly, common the mind, so be your lots. A common purpose do I lay before you, and worship with your general oblation. One and the same be your resolve, be your minds be of one accord, united be the thoughts of all that may happily agree. ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें जो सभी जनजातियां हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिखा है कि हम लोग एक दूसरे के देवी देवताओं को पूजेंगे और हर एक पारंपरिक देवताओं को यज्ञ के अग्नि के इर्द गिर्द बैठने का हक है. So this is a contract by which all the gods and goddesses have been given a space around the planet. Now notice what a powerful idea this is, because this idea then begins to spread, and it begins to spread outside of this general area. I explained to you originally it came from one small Haryana tribe, then it spread to Punjab and to West UP because they conquered it. Now it spreads to other people, and over time
my forefathers who are from Bengal. Why do I call myself a Bharatiya? Because many thousands of years ago, my forefathers signed this contract and said that I am willing to worship all everybody's gods and here are my gods, please accept them around the fire. तो मैं नहीं जानता कि मेरे पूर्वज कौन देवी देवताओं को पूछते थे, क्योंकि मैं आज शाक्त हूँ, मेरे परिवार शाक्त हैं, तो शायद ये दुर्गा काली इत्यादि को उन्होंने उनके उस समय की देवियां थी जिनको यज्ञ के सामने बैठने का और उसके बाद एक स्थान दिया गया। तो ये जो मॉडल है ये है हमारे पूरी सभ्यता का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम जो सेट हो गया उसके बाद आप एप्स ऐड करते जा सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल फोन पे है ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पर एप्स ऐड करते जाते हैं, तो यही ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके आधार पे ये ऐप ऐड होते जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, अब ये जो वैदिक आइडिया धीरे धीरे पौराणिक काल तक, तो देखिए वैदिक काल कब है, ये सरस्वती जब बह रही थी उस समय की बात है, तो 2000 साल 2000 ईसा पूर्व में तो लुप्त हो चुकी थी, तो उससे काफी पहले हुआ होगा, शायद आज से 5000 साल पहले यानी 3000 ईसा पूर्व। लेकिन आज से हजार ईसा पूर्व मानी मतलब वेदों के लिखने के वेदों को एक साथ कंपाइलेशन के 2-3 हजार साल बाद जो पौराणिक पीरियड में देखिए ये जो आइडिया है कैसे पूरे जाम्बू द्वीप में मतलब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फैल चुकी है। तो क्या होता है कि पौराणिक उसमें 7 रिवर्स का जब वर्णन होता है वो अलग से किया जाता है। एक चांट है जो शायद आप सभी जानते होंगे, ये सब देखते हैं कि ये सप्त सिंधु का जो आइडिया है वो अलग तरीके से लिया जा रहा है। इसमें गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, इन सभी नदियों का वर्णन है और देख सकते हैं साउथ इंडिया के भी नदियां हैं। तो फिर से मैं भास्कर जी को अनुरोध करूंगा कि इस चार्ट को गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। आपको तो फिर साफ दिख रहा होगा कैसे हमारी जो ये सभ्यता है, संस्कृति है, वो कैसे फैल रही है, क्योंकि पौराणिक पीरियड में ये पूरे भारत में फैल चुकी है। अब प्रश्न ये है कि बहुत ट्रेडिशनल अकाउंट्स में ये नाम भारत या भारतवर्ष को एक राजा भरत से जोड़ा गया है। तो सुदास और इस राजा भरत का क्या संबंध है? अब इसमें काफी बहस हो सकता है, लेकिन एक चीज साफ है कि जो आप ये कालिदास में जो भरत हैं यानी ये जो शकुंतला और दुष्यंत के जो पुत्र थे जो वो नहीं है, ये और एक भरत है, उनके पहले उनके पूर्वज थे जो नभी के पुत्र थे और ऋषभ राजा के पोते थे। उस भरत के साथ भारतवर्ष का ये संबंध है। तो ये भी साफ है। आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि ये this king Bharat had also conducted the Rajasuya Yajna and had declared himself as the Chakravartin. Now it is possible that this Puranic Raja Bharat is actually a faint memory of Raja Sudas, because remember many kings are usually remembered by their tribal name. Even today Raja Jaipur. To a certain extent, it may be he was remembered as Raja Bharat because he came from the Bharat tribe. So it is possible that this is a faint memory in the Mahabharata of Raja Sudas. It is also possible it's a separate Raja. We do not know. You know, many kings may have conducted the Rajasuya Yajna. Nonetheless, it is interesting also that his father Nabhi had also carried out the same yajna and supposed to have conquered all of the subcontinent. तो भारत का एक और नाम है नभी वर्ष, जो शायद आप में से बहुत कम ही लोग जानते होंगे। तो हमारा एक नाम है नभी वर्ष।
और उनका जो सिंबल था वो क्या था? वो था चक्र, चक्रवर्ती का चक्र, जो आज भी हमारे फ्लैग में है। Now, the question now is, how do we, okay, one is, okay, fine, we have an identity, it is related to this contract and to the name Bharat, but what is the geographical context of this? So the geographical context of this is, in the Puranas, is very clearly described. Usually Vishnu Puran is used to describe this, but in fact every single Puran actually mentions the geographical context of India. And it clearly states the Varsha, i.e. the land that is north of the ocean and south of the Himalayas, is known by the name Bharata, and the people there are known as Bharati. Slight variation of there is in every other Puran. So it's very clear that this is the subcontinent south of the Himalayas and north of the ocean. So the geographical context is there. It also tells us, this is from the Brahma Puran. I deliberately not use the Vishnu Puran, but the Brahma Puran, which is Vivek Dev translation, that the Kiratas live to the east, they are the Tibeto-Burmans, and the Yavanas or the Greeks live to the west. Now this also dates this Puran, because when did the Greeks live to our west? This was just after Alexander's invasion, when the Indo-Greeks were living to the west of us, in fact, an occupied part of western India. So it is very clear that the Brahma Puran was, by the time of the Brahma Puran, there is a clear idea of where India is. The earlier Purans also have this description, and we know that the Tibetans live to the east, Tibeto-Burmans live to the east, and the Yavanas live to the west. So again, clear where we are from. And in addition to this, there are descriptions. सब पर्वत मालाओं का इसमें वर्णन है. तो महेंद्र पर्वत है जो आज ईस्टर्न घाट्स, मलय पर्वत या साउथ वेस्टर्न घाट्स यानी नीलगिरी, सह्याद्री यानी नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स, ये तो नाम आज भी है, सुक्तिमत, अरावली, रिक्शा यानी सतपुड़ा, विंध्या, जो उस समय सिर्फ ईस्टर्न विंध्यास के लिए दिया जाता था, विंध्या, और परियात्रा यानी वेस्टर्न विंध्यास. ये ईस्टर्न और वेस्टर्न विंध्यास जहां मीट करते हैं उसका नाम अभी हम लोग वही है विंध्याचल, यहाँ से बहुत पास है. अगर आप नॉर्थ ईस्ट के हैं तो आपको लग रहा है कि आपको छोड़ दिया गया है, इसमें ये नहीं है. यहाँ very clearly said there are those who reside in the east, such as the inhabitants of Kamru. So नॉर्थ ईस्ट का भी इसमें वर्णन है. अब हमेशा जब मैं ये प्रेजेंटेशन करता हूं तो कोई ना कोई आके कह रहा है, yes, but what about the Dravidians? So let me tell you that the Dravidians and what is their concept of their own identity is quite clear, that they were right from the very beginning a part of this story. So the oldest literature in Tamil is the Sangam collection. It's the oldest Tamil literature. There is literally nothing before this. And it was compiled as poetry between the 3rd century BC and the 3rd century AD. And in the very first Sangam text, which is a grammatical text called the Tolkappiyam, from circa 2nd, 3rd century BC, it starts with a preface, which is the first known statement of Tamil identity, which says, in the virtuous Tamil-speaking land that extends from Venkatam in the north to Kumari in the south. So it's very clear, even today, Tamil Nadu is roughly there, Kumari in the south is Kanyakumari, Venkatam in the north is just about across the border, that's the Tirumala hills, and that is just a little across in Andhra Pradesh, but it's the general area. And this is clearly stated, this was Tamil territory 2,300 years ago. Now comes the twist in the tale. In the same preface, just a few lines below this, it says that the text in the wisdom of the 4 Vedas is rooted. In other words, the oldest known proclamation of Tamil identity clearly states that it is rooted in Vedic civilization. You cannot get away from this. No Dravidianist, Periyarist can get away from the fact that the oldest known proclamation of Tamil identity clearly states that it is rooted in Vedic civilization. It is also interesting
that Haryana is remembered. तो हरियाणा को ये origin point है, इसका मतलब नहीं कि सब भूल गए कि अब फैल गया है तो अब छोड़ दीजिए। हमेशा इसको ब्रह्मवर्त के नाम से इसको याद किया जाता है। मनुस्मृति में भी इसको कहा जाता है कि जो सरस्वती और दृशद्वती के बीच का जो ये भूमि है उसका नाम ब्रह्मवर्त है और ये ओरिजिन पॉइंट है ऑफ हमारी सभ्यता का ये ओरिजिन है। तो हरियाणा जो नाम है, कुछ लोग सोचते हैं कि ये 1950s में पंजाब के विभाजन के बाद हरियाणा नाम आया था, ऐसा नहीं है। ये बहुत प्राचीन नाम है हरियाणा और इसको पहले हम लोग ब्रह्मवर्त के नाम से जानते थे। Now there is a further interesting issue. You see, the Rig Veda is composed in a language that is almost identical to Avestan, which is the ancient language of the Persians. And the Zend Avesta, which is the oldest Zoroastrian text, is written in this language. It is almost identical. In fact, except for a small pronunciation change, a few pronunciation changes, it is the same language. So the the Vedic Sanskrit Sa becomes in Avestan Ha. By the way, this exact same thing happens in modern Sanskrit. So my name Sanyal will become Hanna, Ha. So it happens exactly the same way in Sanskrit. Saraswati becomes Saraswati in Assamese even today. And this exact thing happens incidentally in Old Persian. So what is the name by which they know the Sapta Sindhu? They call it the Hapta Hindu. This is the first use of the term Hindu. Hapta Hindu, it is not from the Sindhu as Hindu, but from the term Hapta Hindu as in land of seven rivers. It is a clear reference to the Bharatas and their homeland. It is interesting, however, that there seems to be a dispute between the people who ever wrote the Western and the Vedic people. Because in their texts, the Devas are the evil people and the Asuras are the good. इसीलिए they worship Ahura Mazda, the great Asura. और later Indian पौराणिक tradition में भी जो ये good bad का ये tradition है, उसमें असुर bad हो जाते हैं और देव good हैं. लेकिन ऋग्वेद में this is not true. If you read the Rig Veda, the Asuras and Devas are simply different sets of gods. Gods and anti-gods. And many of those who we consider to be Devas are actually Asuras. For example, Varuna is an Asura. Rudra is an Asura. So it is very important to remember that the original religion did not look at the dichotomy as good and bad between Asuras and Devas. They were basically much more like yin and yang. Those of you who are familiar with the yin and yang idea of East Asia, it was much more like that. And so this is how they thought about it. However, obviously there was some dispute. It may have something to do with the Battle of 10 Kings. अब बैठ सकते हैं आप. Obviously, it could be something about 10 Kings between when the Bharatas won. They had defeated a tribe called the Parasats. This is the ancient name, by the way, of the Persians. The Parasa people, the Persians. So it is possible that after this battle, the Bharatas pushed out this tribe which went out westward and settled in what is now Iran. Now, there are other foreign descriptions of India. There are Chinese, Greek, Arab and other foreigners who also clearly described India in a geographical and civilizational unit. तो ये भौगोलिक और सांस्कृतिक राष्ट्र के तरह ये लोग का वर्णन है. ये नहीं है कि आज ही इसके बारे में हम इस तरीके से सोच रहे हैं और कि भारतीय इस तरीके से सोचते थे. बाहर के जो भी थे, they used to recognize the fact that Chinese, Greek and Arab, they all recognized that we had an identity of our own. Ancient Greco-Romans called us the India, Negasthenes called Indica. Ancient Chinese has various variations. Sindhu, that becomes Yondu, Tianzhu. It even turns up in Japan as Shinto.
ancient Egyptians, Hindui, medieval Arab, Al-Hind. Now, Al-Biruni's book, again in India, describes civilizational unity of India. Now remember, Al-Biruni is not a friend of India. He was a spy who was sent by none other than Mahmud Ghazni to India to study India before he invaded it. And even he agrees that there is a civilizational identity. So, ठीक है, ancient period, be clear that there was a civilizational identity. Now, what happens to this identity in the medieval period? Does this disappear? No. In order to understand this, you need to understand the story of the Shakti Pithas and their distribution. So, where does the story of the Shakti Pith come from? It comes from the story that once the father of Sati had a big yajna in which he did not invite Shiva. Now, why is this a bad thing? It violates the contract. Remember the contract? All the gods have a place around the fire. So, nonetheless, a yajna was called in which Sati came and she saw that her husband had not been invited. So, it is already an invalid yajna. And so, she violates it with her own body by throwing her own body into the yajna and burns herself. So, the yajna पूरी तरह से रुक जाता है. So, this is sacrificial. So, the violation of the contract is a very important part of the Vedic idea. And by sacrificing herself in the fire, she stops this. And of course, then Shiva picks up her body. And this is a very serious thing, violation, and she's going to destroy the world as a result of which. So Vishnu cuts up her body into small pieces and throws it all over the landscape of India. And in that sense, in her own body, she unites the landscape. And so you look at where all these are distributed. The westernmost is Hinglaj in Balochistan. Easternmost is Tripura Sundari, Tripura. Northernmost is Sharada, which is now in Pakistan-occupied Kashmir. And the southernmost is Kanyakumari. You can see this is a sacred landscape that has been united in the very body of Sati herself. She's binding it together. So again the same idea, the contract, violation of the contract, and we do the same thing by the way in Holi. The same story is told from the Vaishnava perspective. The Vishnu is not worshipped, so violation of contract again. And so the same thing is happening when you're doing Holika Dahan. Same idea. फिर देखिए शंकराचार्य की यात्रा कहाँ गए थे, कहाँ थी इनका जो ये, इट्स नॉट अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है, आपको दिख रहा है वही लैंडस्केप में ये घूम रहे हैं. और फिर उन्होंने जो मठ, इनका एस्टैब्लिशमेंट कहाँ कहाँ है, पूरी श्रृंगेरी, द्वारका, बद्रीनाथ, चारों कोनाओं में. So this is a sacred geography that is being bound together repeatedly by all these people by doing this. Now, it is not that medieval area that's happened, okay. So I have hopefully proved to you that in medieval times there was a clear identity with overlapping with the geography. So did we forget this in modern times? No. This is the Trichy Declaration by Maratha Pandyan in 1801 when the polygars rose against the East India Company. Now the polygars were a small group of chieftains from Tamil Nadu. And they rose against the East India Company in 1801. They are from Tamil Nadu and maybe neighboring areas of Andhra, etc. Now look at what they say in their, who are they claiming to represent in this proclamation? To the castes and people, Brahmins, Kshatriyas, Vaisyas, Sudras and Musalman that are in Jambu Dweep, subcontinent of Jambu Dweep, this notice is given. This notice that is not addressed to a specific, so this notice, this is not addressed to a specific group, to the people of a small region. They didn't say, this is to all the people of Tamil Nadu or Dravidistan, etc. They said, use the word Jambu Dweepa. Jambu Dweepa meaning Bharatvarsha, the landscape of the subcontinent. So even early medieval period, 1801, small group of people in southern India rising in revolt. Who are they claiming to speak for? They are speaking for all of India.
So this identity is a very is a very strong thing. Vivekanand's Parivrajaka. Just like Shankaracharya, you can see he is going all over India in exactly the same way. Okay, 1890 to 92. Again, notice same landscape, same idea of binding together. So the point here is that the idea of India is an ancient one and it is evolving. It is a civilizational nation. It is not a Westphalian nation in the Western sense. It is a civilizational idea of nation. And of course, we are not the only people with this idea. The Chinese have an idea of civilizational nation. The Israelis have. In some sense, the Iranians also have. The Greeks used to have in ancient times. After all, they fought with each other all the time. But when the Persians turned up, they all united. So we are not even unique. And we are very clearly a civilizational nation. But very important here to remember that we are not a pure nation. This does not mean that it's some pure idea of purity or of common origin. This is mostly about an origin going back to an acceptance of that contract. And at different points of time, this even spread outside of India. It went to Southeast Asia, to places like Bali. The largest Hindu temple in the world is in Cambodia. So remember that this is an idea that has spread over time. It has shrunk, it has spread, and so on. And the important part is it includes in it foreign contributions as well. After all, what would Indian civilization today be without potatoes and tomatoes? Most of you eat potatoes and tomatoes. What to hear by the Portuguese? Or cricket, which is now part of our civilization. Or the English language, I'm speaking in this language. So I'm not making a case for a pure civilization to go back to the beginning or something. But the fact that this civilization exists, it has a clear identity for long periods of time, is well established. I hope I have been able to prove that to you. However, acknowledging the importance of foreign contributions does not mean we extend it to celebrating our own subjugation. I want to make this clear. Just because I like cricket and like Shakespeare does not mean I have to celebrate the British Raj. And this is also true for the Mughals and many others who may have come here. Their contributions are entirely welcome. But that does not extend to celebrate our subjugation. Now, the founders of the Indian Republic were very conscious that it was a modern manifestation of an ancient civilization nation. So, Jawaharlal Nehru, on his 15th August 1947 speech, he says, "The soul of a nation long suppressed finds utterance." Okay? They are all conscious of this. He is not saying the soul of a union of states long suppressed finds utterance. That may be what his great grandson says, but that is not what he says. The first line of the constitution is India, that is Bharat, will be a union of states. तो ये सिर्फ अनुवाद की बात नहीं है. अगर अनुवाद ही करना था तो क्या कर सके? अंग्रेजी वर्जन में लिखते इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स और हिंदी में लिख देते भारत विल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. हो गया काम. लेकिन दोनों वर्जन में दोनों नाम दिया गया है. क्यों? क्योंकि इंडिया इज द मॉडर्न रिपब्लिक, भारत is the ancient civilization. So what is happening is that it is clear that the framers of the constitution are saying that this republic is the modern manifestation of this ancient civilization. And I am not making this up because D.R. Ambedkar made clear to make this. Says, though the country and the people may be divided into different states for convenience of administration. In other words, the states are there for convenience of administration. They are not there. It's not the United States of India. And the country is one integral whole. The people are a single people living under a single imperium derived from a single source. What is that source? Our civilization. And he says the drafting committee thought that it is better to make it clear at the onset than to leave it to the speculation or to dispute. Because he knew that 75 years later, there would be some great thinkers who would have a slightly different view. With that, thank you very much. The
problem is that today, if I will believe in this idea of India, then I will be tagged as Hindutva, fascist, Brahmanical person. So how to cope with that? Thank you. So the reason I come here to give this talk is precisely so that you know that this idea is very well rooted, well documented. I showed you, and that's why I made sure Bhaskar ji chanted them all out to you. I didn't make it up. हर जगह आप presentation आप freely available है आपके पास. आप इसमें क्या-क्या इसके जो resources हैं, किस ऋग्वेद के या किस पुराण के कहाँ से किस चैप्टर से मैंने लिया है, साफ लिखा है. आप जाके इसको वेरीफाई कर लीजिए. आपको मैंने सुना भी दिया है, तो आपने सुन भी लिया है. हाँ, तो सरस्वती नदी कहाँ बहती थी, साफ है. वो ये जो जनजाति थी वो कहाँ रहते थे, वो भी साफ है. वो भी साफ है कि ये जो सभ्यता कैसी फैली, वो भी साफ है. ये भी साफ है कि इसका कॉन्ट्रैक्ट क्या था, और ये प्राचीन काल से मध्य काल तक ये फैला. उसके बाद ये आज आधुनिक काल तक ये जो सभ्यता, इसका जो फ्लो है वो तो साफ है. तो इसीलिए मैं आई एम कमिंग टू प्लेसेस लाइक दिस in order that you are very clear that, you know, when we are generally making this statement, it's not some general statement we are making. What we are really fighting against is a very shallow colonial idea that was spread by those who ruled us to essentially tell us that who are you? You people are not even a people, you don't have a culture, I am ruling you. So of course we will rule you. So of course colonial people will always do this. By the way, this exact narrative was done by the Europeans in every other part of the world. The French have a similar story about the people they conquered, the Dutch about the other people they conquered. When the British went to Australia, they called it terra nullius. Terra nullius is Latin for empty land. The fact that there were people living there did not matter. What they are saying, that you don't matter. So, this idea was somehow managed to be put into our intellectual life. And of course, they would do that. The question is, why 75 years after independence are we still perpetuating it? And my theory on this, and it's a theory, you can take it or believe it, is that one of the major problems of our post-independence history is that those who became the intellectuals of India after independence were not the descendants of those who fought for India's independence, but those of the collaborators. I will not take names here, but you can do your Google search. But you will find that almost all the key intellectuals of post-independence India, the writers, historians, journalists, and so on, all of them were either collaborators themselves. I'll take here one name, at least Yashpal, who provided the information on the basis of which Chandrasekhar Azad was killed. He became one of our greatest writers of Hindi. Just imagine. And there are many others. You find out a little bit about the Thapar family. Find out a certain journalist whose grandfather was in the Imperial Police Force and ordered the firing on the rebels of the naval revolt of 1946 in Mumbai. Find out who they are. So this was the major problem. Why this happened? Next question, please. Hello, sir. My name is Divyanshu Tripathi, and I am a research scholar in Pandit Deendayal Upadhyay Chair. So, my question to you is: was there an absence of Sanatan Dharma before the socio-religious contract that you have talked about? And if so, what about the worship of Pashupati Mahadev that the idol was found in Indus Valley civilization? So, one important thing that you must understand, और इसमें एक्चुअली भास्कर जी को फिर बुलाता हूं, आपको चांट करके समझाता हूं क्या. The Vedas do not claim that they are the origin of our civilization. They are the assimilators of our civilization. Right? Those who were putting together the compilation. ये संहिता है. This is very different from, say, the Quran, which is a beginning point. So the rishis are not saying कि ये सभ्यता हमी से शुरुआत किया गया है. वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने इसका
इसका संकलन क्या है? We have compiled this all in one place, and they actually claim this, say this in the very first suktam of the Rig Veda. It's called the Agni Suktam, in which they interestingly state that it says first, oblations to the Agni and so on, and then we give regards to the modern rishis and to ancient rishis. मतलब ऋग्वेद के टाइम में, this 5,000 years ago, they are already talking about the ancient rishis. So what they are accepting is all the ancient gods and those traditions already exist. All we are doing is putting it onto a common platform. That's why it's a samhita, compilation, and we are creating a common minimum program of rituals, which is the Yajurveda. तो आप समझिए क्या हो रहा है? ये this is the creation of a common operating principle. Now you can keep adding apps to it, as I said. The Pashupati worship may have existed well before the existence of the Rig Veda. Now, having said that, I'll make one clarification. The fact that the Harappan seals have it does not mean it predates the Vedas, for a very simple reason, that the Harappan cities rose when around about 3000 to 2000 BC, when the river was already drying. Whereas the Rig Veda is clearly during a period when the river is flowing completely. So it is very clear that the Rig Veda predates the Harappan cities. It relates perhaps to the early Harappan period or even pre-Harappan period, because the river is in full flow, and we know from geological studies that by the time the great cities of Harappa were built, the city was already in decline, which is not mentioned in any of the Rig Vedas. So the Rig Veda predates the Harappan cities. But that's a different point. I'm just making out the point here to you, is that the Rig Veda is not the origin of our civilization. It's that which connects all the dots of our civilization. That is what is going on here. But since I asked Bhaskar ji kahan gaye? Yahan hai. So I want him to chant the very first suktam of the Rig Veda, where the ancient and new rishis are both being given respect. And remember this, 5,000 years ago, Bronze Age, they are already talking about the ancient rishis. Om Agniveere Purohitam Yajñasya Deva Mrityujam Hotaram Ratnadhatamam Agnih Purve Bhirvishibhiredhyo Nutane Vruta Sadevam Ehadakshati. So it's very clear, right in the beginning. So the Rig Veda, you see, when Western scholars are studying it, they think it's a random distribution of. It's not the case. It's very clear what the first, and you heard that this is the first suktam, where they're clearly saying we are paying respect to the ancient and present rishis. So they're already talking about continuity. And in the last, they're giving all the gods space around the fire. All the ancient gods have a space around the fire. So you can see what is going on. They are talking about continuity, and they are giving respect to all the gods of all the tribes. And by the way, new people can also join it. So as I said, at some later point, my forefathers would have joined it. They may have contributed Kali and Durga and Jagadhatri, another god. Maybe some of you come from other parts of the country, you may have contributed. And then we created a common platform in which we could, essentially, it's like, as I said, you can keep doing this. As we grew, we may have gone to Southeast Asia, we would have taken on gods there also. And so on and so forth. Yeah, the next question. He wants to ask a question, then I'll come back. My name is Vinay, I'm a student of political science. The question is that, sir, so there has been a population in the discourse of narratives that is reclaiming the Indian civilization identity, sir. As Bhagavad Ji and many have been saying about the geographical and civilizational identity that we are all one. My question is, sir, in the present context that there has been a toxification of conversions and radicalization across the expanse of the population. How do you think that this rejuvenation project would help to counter that, because you are working with the government too? So what do you think that what are the policies that would help? Well, I'm here in personal capacity, and this is not my area of work. I work in a different field altogether. But it is important
that this conceptualization of Indian identity and giving its clear history with all the details is an important project. Because first of all, otherwise you will keep hearing nonsense that you are subjected to, that India is not a nation but a union of states, even though the person who said this belongs to the Indian National Congress. And this is stunning, but you see these are dangerous ideas, because essentially what they are doing is they are normalizing into our heads this idea that India was never a nation. And of course, this is a useful project for certain ideologies. But I want to show you that this idea that we have is a very old one. It is there from the beginning. Certainly by the Puranic period, you can clearly see that's 2,500 years ago at least. We already covered the whole geography of India. The Sapta Sindhu concept has already transferred itself and includes the Kaveri and the Godavari. You heard that yourself. It's a common chant. I didn't make it up. Many of you probably already knew it. The Puranas, all of them, not one, all of the Puranas describe that the description. Roughly, I gave you one. There are others with slight variations, but all the Puranas describe the way. So it is a very deep-rooted identity which is there. It is not something in the 19th century we suddenly described because the Westphalian model of nationhood suddenly popped up. No, this is a very deep-rooted thing. So when we hear these ideas being spread, it is largely because they are basing it first of all on colonial narratives that they are perpetuating, and they need to therefore perpetuate other lies as well to keep the wider ecosystem going of this, including things which have absurd things like the Aryan invasion theory. There is no evidence for it at all in any way. You have all the top geneticists in the country right here. You can ask them. There is no sign of it in our genes. It is not there in the archaeology. In fact, it could not have been for the simplest reason. There was nobody living in Central Asia during the Ice Age. It was just too cold. It's even today very cold. So, this business of our civilization coming from some Central Asia is utter nonsense. All that they were trying to do is to tell us that, yes, we have occupied your country, but you know what? Your civilization was given to you by some white people from the north, and we are here only to give you a software update. So if this is the thinking that they were trying to give us, the question is, what is the agenda of those who are trying to perpetuate this? And as I said, one part of it, not all of it, one part of it is the collaborator class essentially justifying themselves. Since they are aware that they were collaborators to this country, what they are trying to say is that we could not have been traitors, because you can only be traitor to a country if the country did not exist. How could I have been a traitor to it? And of course, there was a particular strand of political class which came to power after independence, which captured power, and it suited their narrative as well. Because then you could say that this nation is in existence because of us. Otherwise, this nation doesn't exist. Then it is possible to have a father of the nation. And once you have a father of the nation, you can have a chacha of the nation. You can even have a damad of the nation. So, damad-e-Hind is only possible if you are able to prove that the entire existence of India is based on them putting it together. If this idea existed from the very beginning, then it is a threat. Yes, there was a lady here who wanted to speak. Good evening, sir. My name is Kritika Maurya and I am doing history honors from BHU. So I am having two questions. So first of all, sir, as you have said that Al-Baruni can be regarded as a spy to the country. So, but what I have, as per my best knowledge, I have studied that he was so much interested in the Indian culture that he stayed even in Varanasi, learned Sanskrit, translated many books into their language, and that even today helps us to understand many of the things. So how far? So let me. Spies are always very interested in your country. The problem is, who are they working for? There is no dispute that he was funded by the Mahmud of Ghazni. Yes. There is also no dispute that you read
Al-Biruni is India, he very happily gives you all the distances from various points in the. It is also known that many of the places he mentions were attacked or attempted to be attacked by the guy who paid him. So yes, it is an interesting book to read, but let us be very clear what his intentions were. So my next question is that you have told us about the Jambu Dweep. So the Polygars has mentioned it in the declaration. So but as we know, our India is so big and different with different climatic conditions. So it is not for sure possible for the jamun to grow everywhere. And this Jambu Dweep, I think, has come with this. Then you know it is not the source of the idea. Take a Jambu. You have seen a Jambu? You know what's it? Look at the shape. It has got a peninsula at the bottom and high at the top. So what you are dealing with is the shape. It is the Himalayas at the top which are there, and then it narrows down into the peninsula. Now can you see the shape of the Indian subcontinent? That is Jambu Dweep. There's a gentleman right at the end, but there's somebody here. Yeah, you can see. Thank you, sir. First of all, I'm Avinav Mukherjee. I'm currently pursuing my English honors. Finally, greetings to all the dignitaries present over here. So, first of all, a very simple question I would like to ask that previously you have seen how there has been the demonization and politicization of certain Indic texts like the Manusmriti, which has been wrongly translated by the Western civilization, and basing on that we demonize those texts. So, sir, how can we bring upon this clarity in the Indian youth per se? In the village, in the rural areas where there are more, which constitutes more than 70% of the Indian population. So, sir, how do we bring that clarity, considering that there is disillusionment regarding the Indian civilizational identity? Frankly, I don't think there is any disillusionment. I have travelled to the very deep interiors of India. There is no real problem. The real problem tends to be in the intellectuals who are usually upper middle class. And as I said, many of them have a curious history related to this. You go down in the streets here, just drive any direction you wish for an hour and ask them about their Indian identity, they will have no doubts about it. And this is true across the country. Okay, so this is one important thing. Now, as far as Manusmriti is concerned, it's very important here to understand that there are many Manus in our history. Manu is a lawgiver. It is not a name, it's a title. And it's a title given to those who have established civilization after some cataclysmic breakdown. So the Manusmriti we have is of one of the Manus who is supposed to have re-established civilization after a major breakdown. Now this Manusmriti, incidentally, is not canonical. It's a Smriti. It's not a Shruti. It's telling you so. By the way, anybody can write a Smriti. Anybody in this room can write a Smriti. That is the whole point about Smriti. We are an evolving civilization. The idea is that new Smritis are written. New Smritis have been written. Who is the lawgiver of our time? Ambedkar. So he is the Manu of our time. The Manusmriti of our time is the constitution. So this is an important thing we need to do. This is out of context, pulling out something and using it. By the way, Manusmriti was always a loose text. It was never, at any point in time, I don't think anybody is here who lives has even read the Manusmriti. I'll be very surprised anybody in this room has read Manusmriti. But even if you have, it's very unlikely you have ever met anybody who leads their life based on it. So in that sense, it's a completely different text from, say, the canonical value of, say, a Quran. It is not at all like that, or even of the Hadiths. It's totally not. You can entirely perfectly good to be a Hindu, and a very practicing and orthodox Hindu, and have nothing to do with the Manusmriti. It is even possible for some of you to write a new Manusmriti. Because it's a Smriti, that's the whole point about a Smriti. The Shrutis set up the working principle, the organizing principle, that is the underlying operational system. But we have the whole evolution of our civilization is like continuously adding apps to it. The Manusmriti is an app of some point in time. You are entirely welcome to add another app and carry on. सर मेरा क्वेश्चन है कि जो द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन आइडेंटिटी में सर मेरा नाम आलोक पांडे है, मैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से हूँ।
मेरा क्वेश्चन है सर कि द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन आइडेंटिटी में मुस्लिम कम्युनिटी को आप कहाँ मानते हैं? क्या इस सिविलाइजेशन आइडेंटिटी में उनका योगदान है कि नहीं है? क्योंकि कंटेम्पररी टाइम में सोशल मीडिया में या फिर हम यूथ में ज्यादातर ये चीज दिखने को मिल रहा है कि मुस्लिम बाहरी हैं, हमारे देश के पार्ट नहीं है। तो क्या इंडियन सिविलाइजेशन आइडेंटिटी में मुस्लिम पार्ट है कि नहीं है, और इस सिविलाइजेशन आइडेंटिटी के विकास में उनका कहाँ है और कैसे योगदान है? तो मैंने शुरू से ही कहा कि ये कोई स्टैटिक आइडेंटिटी नहीं है, ये इवॉल्विंग आइडेंटिटी है। दिस हैज अ लिंक टू द ओरिजिन, इट हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम, various people have been added along the way in various ways. So as you will see in Trichy's declaration, when they talk about Jambu Dweep, the Muslims are also added to that declaration. So they were added along the way. This is, as I said right in the beginning, many of these Muslims are anyway Indians, even by origin. So they are very much from the beginning, but even if you take into account the foreign elements that were brought in, they are also part now of our civilization. Taj Mahal is a part of our civilization. So is biryani. But that does not mean that we celebrate the Turkic subjugation of this country. I said that right in the beginning. By the way, the British conquest of India has also left behind many things. There are many people who may have converted to Christianity at that time. They are a part of our civilization. Many elements of British period are now element of our, very much a part of it, not those who may not have liked the British, but I am speaking in English today. So ये जो एक स्टैटिक पहचान नहीं है, हर युग में इसमें कुछ कुछ नए नए चीजों का योगदान हुआ होगा। यवनों का योगदान, हिंदू मंदिर है वो वैदिक पीरियड में हिंदू मंदिर है ही नहीं, तो किसी समय ये टेंपल बिल्डिंग का ये कल्चर जो है वो आया। हो सकता है ये हम लोगों ने ग्रीक से लिया, क्योंकि वो उनका एक टेंपल बिल्डिंग कल्चर था, हमारा नहीं था, तो शायद उनका ये योगदान है। तो मैं ये मेरा कहना ये है कि आप इसको स्टैटिक तरीके से नहीं देखें। जस्ट बिकॉज देयर इज अ डीप एंड लॉन्ग लास्टिंग आइडेंटिटी डज नॉट मीन दैट इट इज अ स्टैटिक आइडेंटिटी। मेनी पीपल हैव बीन एडेड अलोंग द वे एंड इन फ्यूचर विल बी एडेड अलोंग द वे। I will take it to the back to the lady after this. आप प्रश्न पूछ लीजिए। I will take 3-4 questions because now it's becoming quite late. So, सर मेरा 3 क्वेश्चन है। कोई एक पूछ लीजिए, फिर दूसरों को भी एक चांस दीजिए। एक काट देता हूँ, 2 कर देता हूँ। सर पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि शब्द, भाषा और उससे निकले हुए अर्थ किसी भी संस्कृति के बाहर होते हैं, तो भारत और इंडिया ये 2 शब्द है, आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? पहला। और दूसरा, एक गांधी जी का स्टेटमेंट है, उसमें आपका क्या व्यू है, मैं यह जानना चाहता हूं। वो स्टेटमेंट ये है कि एनी हिंदू शुड नॉट हार्बर एंगर इन देयर हार्ट्स अगेंस्ट मुस्लिम, इवन इफ द लेटर वांटेड टू डिस्ट्रॉय देम, इवन इफ मुस्लिम वांट टू किल अस, ऑल वी शुड फेस दैट bravely. If they establish their rule after killing Hindus, we should harvesting in a new world by sacrificing our life. तो गांधी जी थे। Now, as far as the use of the word India and Bharat is concerned, sure, the term Bharat is an indigenous term, the word India is not. But the word India has now been used for a very long time. And we have imbibed it. What's the problem? I have right from the beginning said we are an evolving civilization. We have picked up many things. We have also picked up the name India. By the way, the Chinese know themselves as Han. They don't know themselves as Chinese. So what's the big problem? So I am trying to tell you is that ये जो शब्द इंडिया है, इसका origin है सप्त सिंधु से. It is clearly linked to. By the way, they are linked words because the homeland of the Bharatas was सप्त सिंधु. और सप्त सिंधु से हप्त हिंदू हो गया, फिर हिंदू हो गया, फिर इंडिया हो गया। तो ये इन दोनों का जो ओरिजिन है वही हरियाणा से है, उसी जनजाति से है, जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये दोनों ही वैलिड हैं। अब जिस भाषा में कह रहे हैं उसमें जिसमें वो प्रचलित है तो वो है। तो आप भारतीय भाषाओं में भारत का इस्तेमाल होगा, अंग्रेजी में आप इंडिया का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन मैं इस सोच
का नहीं हूं कि इंडिया अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है तो इसको अपनाना नहीं चाहिए, ये गलत है, इसको अपना लेना चाहिए। जैसे शब्द हिंदू है, हिंदू शब्द भी बाहर से घूम के आया है, हमारे अपने लिए शब्द ये है कि हम लोग सनातनी हैं, लेकिन अब हजारों साल से इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, हम भी इस्तेमाल करते हैं, तो कौन सी इसमें खराबी है? अगर आप कह रहे हैं कि हम लोग बाहर के इन्फ्लुएंसेस को अपनाएं, तो हम अपने लिए जो शब्द है उसको भी अपनाएंगे। Good evening, sir. I'm Dhairya. Good evening, sir. My name is Dhairya. I'm a student of law. Sir, in all this context, where is Sri Lanka here? I mean, do we first find this mentioned Ramayana only, or it has some link to the Indian mainland also? No, it has many links to the Indian Sir, mainland. in your discourse, you did not mention it once also. So, how it is related? I would like to know. Well, obviously, Sri Lanka has many links to us. Civilizationally, they have, and for that matter, Nepal has also been a part of our civilization. The majority population of Sri Lanka are the Sinhalese, who have their origins in Bengal and Odisha. Sinhalese as a language is derived from old Bengali. So, there is obviously, they are a part of our wider civilization. They are, however, not a part of our republic. And that's why I said even in the constitution that distinction is there. Nepal is also a part of our civilization, but is not part of our political identity as a Republic of India. So they are two somewhat different things. But that is why when the constitution was made, they write India, which represents the Republic. That is Bharat, which is meaning that we recognize that we are the modern manifestation of this ancient civilization. Is a union of states. So अभी administratively हम लोग इसको union of states की तरह चलाएंगे. यही. So they are a part of our civilizational identity, but they are not a part of our political identity. That is also true of, for example, people in Bali. They are part of our civilizational identity, but they are not a part of our political identity. सर जैसा सर अभी तक के जो टॉक में दो चीजें अगर देखा जाए तो सामने आई हैं, एक हमारे देश के बाहर और हमारे देश में ही एक ऐसा तबका है जो कि हमारे अंदर ऐसा दिखाना चाहता है कि आप एक हारी हुई सिविलाइजेशन है या आप कोई बहुत पुरानी सिविलाइजेशन नहीं है। तो इनके लिए एक चीज ये हो सकती है कि अभी के टाइम में हिस्ट्री में जैसा हमने देखा कि काफी रिसर्च का एक वाइड स्कोप खुला हुआ है, तो इसमें रिसर्चेस क्यों उतनी नहीं हो पा रही हैं। दूसरी ये चीज कि मैं अगर आज यहाँ से जाता हूँ, मैं क्योंकि जूलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मेरा हिस्ट्री से या पॉलिटिकल साइंस से उतना रिलेशन नहीं है, फिर भी मेरा आइडेंटिटी के प्रति अपने लिए एक भावना है, उसके लिए मैं आया। लेकिन जो मेरे बाकी के सहपाठी मित्र हैं, अगली बार ऐसा कुछ होता है तो मैं उनका कंट्रीब्यूशन उसमें कैसे दूं या उन्हें कैसे इसके बारे में जागरूक कर सकूं, अगर इसके बारे में आप कुछ बता सकें। तो देखिए, इतिहास को फिर से लिखने की जरूरत है, ये तो इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं स्वयं इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं कोई इतिहासकार नहीं हूँ। मैंने अपने ऊपर ये एक भार लिया है कि मैं अपने तरीके से इस इतिहास को रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन काफी हद तक ये जो इंडियन हिस्ट्री का जो ये रीराइटिंग है वो सिर्फ हिस्टोरियंस नहीं कर सकते। इसमें बहुत क्रॉस कटिंग इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की जरूरत है। इकोनॉमिक हिस्ट्री फॉर एग्जांपल, शुड इट बी रिटन बाय द इकोनॉमिस्ट्स और बाय द हिस्टोरियंस? सिमिलरली, शुड वी थिंक history of art, should it be done by the artists or should it be done by the historians? The point is we have left it to historians. That there is no need for it to do. It requires collaboration. Secondly, do remember that this particular history that we have inherited was largely written in colonial period because the colonial project wanted to dominate us, and the best way to dominate somebody is to begin to tell their story back to them in a different way. So they did it very systematically. I mean, to be fair to the British, they really invested in our understanding and rewriting our history. But it's very interesting how they went about doing it. So have you noticed that when we read our history books, even today, that no matter when the battle happens, Indians always lose. Battle of Plassey, Indians lose. 3 battles of Panipat, whoever happens to be on the Indian side loses. Battle of Buxar, you lose. Whatever it is. So now, since we are still around, we surely should have won some battles. We are still here now. So what happened to those battles?
The reason they were all edited out is because the British wanted us to feel the sense of inferiority, and so they systematically edited it out. So, for example, even today, we read Samudragupta, one of our greatest generals, by the way. He created an empire, he went all the way down to southern India, etc. etc. Samudragupta is known as the Napoleon of India. It's a colonial term. Now Indians get very excited. Napoleon of India बोल दिया, बहुत सम्मान दिया. But what the colonial historians are doing is essentially saying, yes, he was a great general, but remember, we beat Napoleon. That is the messaging. And we have, still our textbooks use this term. Similarly, notice the way the textbook is written, you will get the impression the Mughals came, they ruled India, and then the British took over India. What they don't tell you is in the intervening 80 years, the Marathas ruled India. Right? Now 80 years is not a short period of time. The Indian Republic has still not existed for 80 years. So what happened to that 80-year period? The British were very, very afraid that there would be another revolt, particularly led by all these kingdoms that had still been left over by the Marathas. And so they quietly dropped out the Maratha period from our history books. So what happens is, Mughals rule India, British rule India. Intervening period, vanish. You will almost certainly not know anything about Bajirao except for that movie about Mastanis. Yes, the gentleman there. Sorry, sir. Where? Sir, here. I'm very sorry to interrupt, but I cannot allow any more questions. I'm very sorry. We are running short of time. Thank you, sir, for illuminating us with the history of the civilization of India and the identity India has. I'll request the audience members to please be seated to maintain a decorum. थोड़ा सा फॉर्मेलिटी है, कार्यक्रम की समाप्ति की कुछ प्रक्रियाएं हैं जिनका पालन करना होगा. आशा है कि इतनी देर आप रहे, थोड़ी देर आप और बेयर करेंगे हमारे लिए. प्रोफेसर अनिल त्रिपाठी जी से अनुरोध है कि वे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे, तो वो इसके बारे में 2 शब्द कहें. सर मंच पर आए. धन्यवाद सर. ऑडियंस आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज 5-10 मिनट का और कार्यक्रम में डेकोरम मेंटेन करें. थैंक यू. भारतीयता, स्वतंत्रता, संस्कृति और आध्यात्मिकता के ध्वजावाहक आज के हमारे यशस्वी वक्ता श्री संजीव सान्याल जी हमारे बीच में उपस्थित श्री आद्य प्रसाद पांडे जी, आज के इस कार्यक्रम के जहाँ तक मैं जानता हूँ सूत्रधार प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे जी, हमारे विज्ञान संस्थान के सभी अध्यापकगण, प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी अगर वो यहाँ पर हैं तो, अन्य विभागों से आए हुए अध्यापक, शोध छात्र एवं सभी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता के प्रति रुचि रखने वाले सभी सुधीजन, मेरा यह सौभाग्य है कि आज मुझे प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे जी के सौजन्य से आज का यह व्याख्यान सुनने का अवसर मिला. और ऐसा सागर्भित व्याख्यान एक अर्थशास्त्री द्वारा दिया जाना अपने आप में विशेष महत्व रखता है. विशेष तौर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इस वेद विज्ञान संस्थान में इसका आयोजन बहुत ही समीचीन है, क्योंकि श्री सान्याल जी ने वेदों से बहुत सारे उदाहरण दिए और जो विज्ञान की बातें हैं, विज्ञान का जो कोर है, उसका जो एसेंस है वो है साक्षी, एविडेंस. बिना एविडेंस के, बिना साक्षी के विज्ञान में कोई बात नहीं कही जाती. तो आज इस वेद विज्ञान केंद्र में
वेद की उक्तियों को लेकर के उसको साक्ष्य मान करके, उसके अलावा और बहुत सारे आधिकारिक ग्रंथों से साक्ष्य लेकर के श्री सान्याल जी ने अपनी बात यहां पर रखी। मैं इस विषय का बहुत गहन ज्ञाता तो नहीं हूं, लेकिन हर एक भारतीय इस विषय में जरूर रुचि रखता है। भारतीय संस्कृति, भारतीय आध्यात्मिकता में उसकी रुचि होनी चाहिए, और उसी प्रकार थोड़ी बहुत रुचि मेरी भी है। ये जो आइडेंटिटी की बात है कि हमारी आइडेंटिटी इस देश के साथ है, इस प्रदेश के साथ है, इस वर्ण के साथ है, इस जाति के साथ है। शायद जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं वो इस आइडेंटिटी से बाहर निकलने की बात है। अगर हम प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे जी से पूछें कि हम कहां से आए, जाहिर है हमारे माता पिता। वो कहां से आए? वो उनके माता पिता। और अगर ये प्रश्न आगे बढ़ता चला जाएगा तो शायद आप अफ्रीका पहुंच जाए। आउट ऑफ अफ्रीका, जहां से कि मनुष्य का विकास हुआ, उस वक्त कौन सा धर्म था, कौन सी आइडेंटिटी थी? उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। जैसा मैंने जानने की कोशिश की है, ये जो सारी की सारी, चाहे ब्रिटिश आए, हमारे यहाँ पे मुगल आए, और आज हम अपने आप को उससे निकालने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो ये बात है कि अगर जो इतिहास है शिकार का, वो शिकारियों ने लिखा है, लेकिन अगर शेरों ने इतिहास लिखा होता तो इतिहास कुछ अलग होता। लेकिन मैं आपका ध्यान इस बात पर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जब भी इतिहास लिखा जाता है तो एक विशेष विचार को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। जो वस्तु स्थिति है उसका विवरण, जो सत्य है, वो बहुत कम लिखा जाता है, क्योंकि इतिहास लिखा गया राजे महाराजाओं के द्वारा, उनकी प्रशंसा में लिखा गया। जो बहुत सारे हमारे मठ थे, उसमें भी कुछ कुछ बहुत सारे जो साधु लोग थे वो सांसारिकता से दूर रहे, उन्हें अपनी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मठ बनाए और एक प्रचार प्रसार किया। इसमें क्या सही है क्या नहीं है, इसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम पूरे विश्व में लोगों को देखें तो हर एक जो मनुष्य के चेहरे हैं, ये सारे के सारे बिलियंस ऑफ लोग, सबके चेहरे अलग अलग हैं। ट्विंस की बात अगर हम छोड़ दें, इतनी यूनिकनेस है, लेकिन उस यूनिकनेस के कोर में एक ऐसी चीज है जो हमें जोड़ती है। अगर रामकृष्ण हमारे पूर्वज थे तो उनके जीन्स भी हमारे अंदर हैं, और रामकृष्ण के जो पूर्वज थे उनके जीन्स भी हमारे अंदर हैं। अगर आप इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको इस चीज का एहसास होगा कि जो पूरी की पूरी मानवता है ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक कोर था जिसके जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन ही सत्य है। जिसने भी इवोल्यूशन को रोकने का प्रयास किया वो आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन हमारी जो संस्कृति थी, हम फिर हमारी की बात कर रहे हैं, हम अपने आप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मानवीय एक स्वाभाविक बात है कि हम अपने आप को किसी भी चीज के साथ जोड़ते हैं। जो हमारी आध्यात्मिकता है उसमें नाम रूप के साथ जुड़ा हुआ, चाहे वो देश हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे संस्कृति हो, लेकिन हमारी आध्यात्मिकता नाम और रूप से परे जाती है। ऐसा तत्व जो हम सबको जोड़ता है, उस तत्व की बात करने की बात हमारी आध्यात्मिकता करती है।
ये जो विभिन्नता हम देखते हैं उससे हट करके हमारी आध्यात्मिकता एसेंस की बात करती है कि ऐसा क्या है जो हमारे में भी है, तुम्हारे में भी है। हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ये सारी बात हमारी आध्यात्मिकता करती है। लेकिन इस आध्यात्मिकता के कोर में उसको अपनी संस्कृति को बचा के रखना, अपने आप को मैं अभिमान की बात नहीं करता, लेकिन एक स्वाभिमान जो एक सेल्फ रेस्पेक्ट होती है जो कि आदमी को आगे ले जाती है, इसको हमेशा बचा के रखने की आवश्यकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो व्याख्यान है, जो कि एविडेंस बेस्ड बातें आपने कही, आजकल जो मेडिसिन भी प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि मेडिसिन की बात एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, विश्वास पर आधारित वो मेडिसिन उसका जमाना नहीं है। हर चीज का आपको प्रूफ देना है, साक्ष्य देना है। और आज जो श्री सान्याल जी ने तमाम सारे ग्रंथों से अपने गहन अध्ययन के आधार पर जो ज्ञान निकाला है, ज्ञान हमारे सामने प्रस्तुत किया है हमारी सभ्यता का, इसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए, इसका अभिमान भी होना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जब दोबारा इतिहास लिखा जाए तो हमारी जय और पराजय दोनों का जिक्र होना चाहिए। पराजय के क्या कारण थे और जय के क्या कारण थे, इन दोनों का विवरण होना चाहिए। तभी हम सही प्रकार से, सम्यक रूप से अपने इतिहास की जो लिगेसी है आने वाले भविष्य को दे पाएंगे कि हम पूर्वाग्रहग्रस्त अपने बारे में नहीं थे। हम एक समत्व वाली सोच रखते थे कि मनुष्य है, मनुष्यता है तो उसमें अच्छाई भी होगी, कमी भी होगी, स्ट्रेंथ भी होगी, वीकनेस भी होगी। उसका सबका सही रूप से अगर हम निरूपण करें तो शायद हम एक सही चित्र आने वाली जनरेशन के सामने रख पाएंगे। मैं विशेष रूप से सान्याल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समय निकाला हम सब के अंदर, क्योंकि ये जो विचार थे जब तक उनकी बात मैं नहीं सुनता तो शायद ये बात मैं आपके सामने नहीं रखता। उन्होंने थोड़ा सा झकझोरने की कोशिश की और हम सभी को झकझोरने की कोशिश की। इतने सारे प्रश्न हुए और इन प्रश्नों का उन्होंने बहुत रोचक तरीके से और सार्वजनिक उत्तर भी दिया। मैं बहुत विश्वविद्यालय की ओर से, अपने संस्थान की ओर से, और चूंकि वेद विज्ञान संस्थान के निदेशक भी यहाँ बैठे हैं, उनकी ओर से भी मैं श्री सान्याल जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और वेद विज्ञान केंद्र के निदेशक प्रोफेसर वीरेंद्र त्रिपाठी जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हम सबको इस विशेष भवन में ये लाभ, ज्ञान का लाभ लेने का अवसर दिया। और अंत में मैं प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे जी का ये आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हम सबको यहाँ पे इकट्ठा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि हॉल इतना भर जाएगा। तो ये शायद प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे और प्रोफेसर वीरेंद्र त्रिपाठी जी को भी इस चीज़ का एहसास नहीं था कि हॉल इतना भर जाएगा। तो इसके लिए मैं ज्ञानेश्वर चौबे जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे जो शोध संयोजक है राणा प्रताप सिंह जी, उनके संयोजन क्षमता की मैं सराहना करता हूँ। और आप सभी लोगों के धैर्य की, आप सबके उत्सुकता की और हमारी सभ्यता और संस्कृति के प्रति आप सबके जो लगाव है उसके प्रति भी मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। We'll proceed towards, thank you sir, we'll proceed for the last formality of the day. The program ends with the formal vote of thanks, and I request convener for Shodh BHU Rana Pratap Singh to convey his vote of thanks. सभी को नमस्कार। मंचासीन आज के मुख्य अतिथि श्री संजीव सान्याल जी, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और जाने माने लेखक, और आज के कार्यक्रम के मुख्य अध्यक्ष श्री अनिल त्रिपाठी, निदेशक विज्ञान संस्थान, और इस वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक श्री उपेंद्र त्रिपाठी, सभागार में मौजूद शिक्षक वृंद और छात्र छात्राएं। धन्यवाद के क्रम में मैं सबसे पहले
उपेंद्र त्रिपाठी जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत में जो हमारे यहाँ की ऋषि परंपरा रही है उसके हानि के मूल में शिक्षा व्यवस्था, जो मौजूद शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में हमें बताया और सभी के सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। धन्यवाद के क्रम में दूसरे नंबर पे मैं आज के मुख्य अतिथि श्री संजीव सान्याल जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने भारत की पहचान के बारे में जो ब्रिटिशर द्वारा प्रयास किया गया कैसे इसकी पहचान को खत्म कर दिया जाए ताकि लोग उठ खड़े न हो, न उनके बारे में उनके द्वारा शासन किए जा रहे भारत पे, उनके द्वारा शासन किए जाने वाले तत्वों पे वो सवाल न उठा पाए, किस तरह से वो अपनी नीतियां बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि आप ऐसे हैं ताकि हम आपको विजिट करके आपके शासन चलाएं, आपको बताएं कैसे आपको सभ्य होना है। और सर ने एक प्रमुख बात बताई हमारे सभ्यता के बारे में, जो कि हमारा एक इवॉल्विंग नेचर है, जिसके मूल में जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ, जहाँ से जो विचित्र राजा थे उन्होंने ये विचार अपनाया कि जो भी हारे हुए राजा हैं उनके जो देवी देवता हैं उनका हम बराबर सम्मान करेंगे और उस अग्नि के बराबर उनको जो भी उनका भाग है उनको हम देंगे। और इतिहास के पुनर्लेखन को भी सर ने रेखांकित किया है। और धन्यवाद के क्रम में मैं विज्ञान संस्थान के निदेशक अनिल त्रिपाठी जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और सभागार में मौजूद शिक्षक वृंद, छात्र छात्राएं, तकनीकी उस संभालने वाले कैमरा और वीडियो को चलाने वाले कृष्णकांत जी और उनके सहयोगी को भी धन्यवाद देता हूँ, और अपने मीडिया बंधु। और साथ में आज का कार्यक्रम जो कि शोध के मंच पे हुआ है, और शोध जो है ABVP का एक फोरम है जिसमें हम लोग रिसर्च स्कॉलर और फैकल्टीज के बीच काम करते हैं, और इस कार्यक्रम को सही तरीके से करवा पाने में हमारे मुख्य सहयोगी रही ABVP BHU की पूरी टीम को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू। संचालक की भूमिका में मेरा उन लोगों को भी धन्यवाद जिनका वोट ऑफ थैंक्स में नाम नहीं ले पाया, उनसे क्षमा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।